Hi, welcome to this unique haircare initiative by IPCA. I'm Mona Sharma and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with the hair care. Our hair is a crowning glory and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, it used to be a sign of middle-age problem when you used to lose hair or have thinning of hair or bald patchy hair. However, with increasing pollution and increase of stress in our daily work life, we are now seeing hair problems occurring at a younger age. It is not uncommon now to see 25 to 35 years old people complaining about hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well and much of the hair loss can be avoided. Today, we have with us Dr. Ratnakar Shukla. He is a well-known dermatologist and has been practicing medicine for over many years now. He's MBBS, MD, specialized in dermatology, cosmetology, and tribology. Currently, he's practicing as consultant dermatologist at his own clinic, Dermagenic Skin and Hair and Aesthetic Gorakhpur. Doctor has dedicated his career to diagnosing and treating a wide range of skin and hair conditions while providing personal hair care services to his patient. He takes time to listen to his patient concern and work closely with them to develop a treatment plan that meets their individual requirement. Doctor is also aware of the need for the patient education and awareness about hair care and spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you so much, Doctor, for sparing your valuable time to answer a few questions on hair care for us today. Welcome to this YouTube live show. Thank you so much. Thank you so much for having me on this platform and giving me an opportunity to present to solve questions and myth about the hair care and dandruff treatment. डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर केयर इन करंट सिनेरियो सो जब भी हम हेयर केयर इन करंट सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं इट इज हेयर लॉस irrespective of gender and age. So can you please enlighten us with your profound experience that what is hair loss and what's normal and when to be concerned for? जी, हेयर लॉस बहुत ही कॉमन है, स्पेशली आज के current scenario में both male and female are affected with this condition. Male में there are so many n number of causes for the hair loss. The most common one is androgenetic alopecia, जिसमें हेयर एक पैटर्न फॉर्म में हेयर लॉस स्टार्ट होता है मेल्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्पोरल साइड देन इट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सेंट्रल एरिया एंड इन एडवांस रेट ऑफ बॉल्डनेस पूरा स्कैल्प ही इन्वॉल्व हो जाता है और ऑलमोस्ट सारे हेयर यहाँ से चले जाते हैं. फीमेल के पैटर्न में द सेंट्रल पैटर्न से वाइडनिंग स्टार्ट होती है और धीरे धीरे स्कैल्प विजिबल होने लगता है. तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द डाइट फैक्टर, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी एन नंबर ऑफ फैक्टर. दिस कंडीशन इज राइट नाउ वेरी कॉमन. और भी बहुत सारे कारण हैं हेयर लॉस के, बट ये सबसे कॉमन. Okay, that's very interesting. So, जब भी फीमेल्स के एकदम वाइड वाइड हुए तो दैट मीन्स इट्स अ हेयर लॉस एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग एंड वेस्टिंग टाइम इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू द डॉक्टर. यस यस डेफिनेटली. या सो बिकॉज फीमेल हैज अ सेंट्रल पैटर्न, तो वहां से वाइडनिंग स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जाता है और लेटरल साइड पे प्रोग्रेस करता है. मेल्स का एक्चुअली पता चल जाता है कभी यहाँ से जाती कभी यहाँ से जाती कभी यहाँ से जाती बट फीमेल्स आर लाइक पता ही नहीं चलता एंड देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम जब सारे बाल गिर यस जाते हैं देन सो इट्स यस. ऑलवेज ओके दैट्स अ वेरी गुड एक्चुअली साइन. मेल में पूरा एरिया ही हेयर चले जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट विजिबल होने लगता है कि ये एरिया से हेयर चले गए. फीमेल में एरिया बिल्कुल स्पेयर नहीं, बिल्कुल बाल नहीं जाते हैं, सिर्फ कुछ बाल जाते हैं. इसके लिए डेंसिटी कम हो जाती है तो स्कैल्प विजिबल होने लगता है, बट फिर भी हेयर रहते हैं. इसके लिए अगर आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो रहा है तो आपको इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. Very informative, doctor. So, doctor, now that we know that hair loss kya hota hai and what's normal and when to be concerned for, another very common question is like जिनको हो रहा होता है या जो prone to hair loss हैं already, they keep asking questions कि मुझे ही क्यों हो रहा है, what is wrong with me? So with this platform, can you please help us to make people aware like what are the general causes of hair loss? Okay, so there are many causes for the hair loss. सबसे पहला genetics.
जेनेटिक्स, इनहेरिटेड जीन्स, आपके फादर में, आपके मदर में, आपके ब्रदर सिस्टर में कैसे जीन्स आए हुए हैं, उनका हेयर लॉस की हिस्ट्री है कि नहीं। अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है तो काफी चांसेस हैं कि आपको भी हेयर लॉस होगा, आइदर आप मेल हो या फीमेल हो, बट हेयर लॉस के चांसेस हैं। अगर Mm-hmm. पेरेंट्स में जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, इसके बावजूद भी आपके खुद के जीन्स हेयर डेवलपमेंट के लिए फॉल्टी हैं, तो भी आपको हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत सारे हैं। इनके अलावा हार्मोन्स फैक्टर्स, मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स, देन डाइटरी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे कितना केमिकल और पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर है, आप कैसा वाटर ले रहे हैं, कैसी डाइट ले रहे हैं, उसमें कुछ डिफिशियंट है कि नहीं, कोई एसोसिएटेड कंडीशन है कि नहीं। जैसे कि फीमेल में बहुत कॉमन होता है थायराइड डिजीज, थायराइड डिजीज इज आल्सो एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट हेयर लॉस। So you need to rule out each and every factor. Only then you can come to a definite diagnosis, and then you can start treatment as per the diagnosis of that patient. So yes, बहुत सारे कारण हैं hair loss के. Mhm. That is very interesting. So there are many reasons, and even some other disease can also lead to hair loss. So people should Yes, get yes, their regular checkup, not only for other health but also for hair loss. Okay, yes. that's very interesting, doctor. So, doctor, another thing is that like nowadays we are all busy and no time to cook, and whatever is available, we eat that, and working late hours and no time to sleep. And so, can a personal lifestyle play a role in hair health? Yes, yes, yes. So obviously, lifestyle play a major role in hair as well. Not just hair, in whole body. And Hmm. hair is also a part of body. So hair is also going to be affected if your lifestyle is not good, if your diet is not good. So Hmm. see, hair also needs vitamins and minerals. If you Hmm. are lacking in essential nutrient, definitely your hair will going to fall. As I already told, thyroid disease is very commonly associated with hair loss. So, Hmm. whether your body system is okay, it is good, or it is affected with some kind of disease, whether Hmm. you are devoid of any essential nutrients like biotin, zinc, omega 3 fatty acid, then Hmm. micronutrient like selenium, copper, manganese, all these factors can contribute to hair loss. Then lifestyle also, if you are not taking a proper sleep, if you Hmm. are taking too much stress, then obviously it is going to increase the inflammation in your scalp, that will further contribute to hair loss. So definitely you need to balance it out. You need to have a proper sleep. You need to take care of your stress level, because in today's era, every people is working on and on and taking so much of a stress, professional stress, personal stress. So you need to balance it out. You need to do yoga. You need to do exercise. You need to do meditation. You need to take proper nutrition. So obviously, you need to take care of all these factors, and once you take care of all these factors, your hair will also going to be in a very good shape. Okay, so even a lifestyle is very important for healthy hair and skin, not only for Yes, other healthy yes. part of the Healthy body. hair and healthy body. It is both very much correlated. Healthy Okay, mind, healthy body, healthy hair. okay. So and glowing skin. Yes, again, yes. Yeah. So that's very interesting, doctor, and it's like good to know that even uh, like uh, we can maintain our stress with yoga and meditation, and people should try to do that and inculcate in their life. So doctor, now that we know that what is hair loss and causes and other stuff, another very common question in this era of information where there are so many information everywhere in the internet, or even while traveling also people see poster that 1000 रुपए में सारी Yeah. बात and all. People are quite confused like मेरे लिए क्या treatment होना चाहिए. So what are those actual medical treatment available for hair loss, like surgical, non-surgical, or any other treatment which are useful for people to manage hair loss? Okay, so see, this era is too having too much information. Everyone is having mobile on their hands, and it is plethora of information. And because of that,
people are often confused what to do and what not to do, who is right, who is wrong. So it is always better when you are suffering with any hair condition or any skin condition, just consult a dermatologist, a proper qualified dermatologist who is board certified, who is having a authentic qualified degree of MD. So you should contact him or her. He will assess you. He will do a proper clinical examination, what disease you are suffering from or what condition you are suffering from, and then according to your hair type or your skin type, he will suggest you the proper treatment. And if you do that kind of treatment, then definitely it is going to work rather than investing your time, energy, and money onto the just some ad you are seeing on YouTube, on Facebook, Insta, or Google. So it is going to you are going to lose your income, also your money, your energy, everything, and ultimately you will gain nothing. So it is always better go for a qualified dermatologist if you are suffering from any problem related to skin and hair. Mhm. So it is always better to go for a certified Yes, dermatologist instead by attracting yes, so seeing those posters and ads and just yeah. going without any Don't go knowing. for ads. Yeah, yeah, Don't go for ads. yeah. Yes, yes, Okay, that's very informative, doctor. So, doctor, there is a word called nutraceutical, which is getting a lot of focus nowadays. Like everywhere, yes. people are like talking about nutraceutical. So, what is this nutraceutical, and what is the role of this nutraceutical in hair health? Okay, so nutraceuticals include all the nutrients which are required for the growth of hair or for skin glowiness or something like this. So yes, there are multiple nutrients like omega-3 fatty acid, zinc, biotin, micronutrient, which is present in adequate quantity in nuts, seeds, legumes, leafy vegetables, fruits. So you should take all these ingredients. You should include all these ingredients in your food so that you will get a proper balanced nutrient in your dietary things. Even after this, sometimes people are lacking these nutrients. So you should consult after consulting a dermatologist. You should take nutraceuticals due to which your hair growth will be maintained, your skin will be in a better condition. So yes, nutraceuticals definitely help, but you cannot just choose some nutraceuticals and take. If you are suffering from condition, always consult a dermatologist, and according to him or according to her suggestion, you can choose nutraceuticals. So obviously, there are many nutrients which are helpful for the growth of the hair. So uh, a dermatologist should prescribe that, and that is going to be helpful. Okay, so doctor, that now that you have pinned out the point that we should always consult to the doctor. So Yes. actually, there are so many people who take these gummies and keep popping it without knowing Yeah. that whether it is working or not. Yeah. So are these supplements are required to take according to the gender RD requirement or under the supervision of the doctor? Or we can just buy and eat it without any knowing that it is working or not. Yeah. So recently, last 1 year or so, there is a trend of biting gummies. So I would like to say this that biting gummies can increase your dental caries, can the overall your oral health will be deprived if you continue to chew biting gummies. So biting gummies should not be used for hair health. Yes, biotin is nutrient which is required for the hair growth, but you should take a proper tablet or capsule as prescribed by a doctor, a qualified doctor, and that you take rather than taking biotin gummies. So that's why I have suggested that इधर उधर ad वगैरह देख करके लेने से बेटर है कि आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट फॉलो करो जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ में हेल्पफुल रहे. So yes, nutrient is required. Biotin is a good nutrient for hair health. So one should take, but only not in the form of gummies, in the form of tablet or capsules.
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर। सो डॉक्टर लाइक अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अब इतने सारे फाइटो कांस्टेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट लाइक ग्रेप सीड ओमेगा फैटी एसिड इतने सारे हैं, आर दे रियली यूजफुल इन प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ? Yes, see, overeating of anything is harmful. So everything should be present in adequate quantity. That's why this term or concept of RDA is there. So we prescribe tablet in which there is multiple nutrient and vitamins in adequate quantity is mixed, and one should take that kind of tablet for the better health. Otherwise, if you take some kind of nutrient in very high quantity, so you are going to get some harmful effect as well. So one should be cautious of this also. Everything should be in adequate quantity. Too much of anything is also a bad thing, and too less of anything is also a bad thing. So you should maintain, you should take a proper balance of each and every nutrient. Okay. So, doctor, now that we are talking about proper balance and people actually doesn't know what is proper balance, so can we, can we enlighten people through this and with your profound experience, like how to design a plate in terms of micronutrients and what are these micronutrients and are they really useful for the people for a healthy body, healthy skin, or healthy hair? Yes. So these micronutrients are present in the leafy vegetables, nuts, legumes, then fruits, seeds. So one should consume all these items in adequate quantity in their breakfast and lunch and snacks every time, rather than taking some processed food, excessive sugar. One should start changing their dietary routine towards this pathway, so that every nutrient is present in adequate quantity and hair growth can be maintained. Okay, so these nuts, leafy vegetables, like Yes, complete design of plate is very important so that हमें सारे yes, nutrients मिले and yes, yes, that's yes. very interesting, doctor, and it's a good tips to eat nuts. Yeah. Yes, yes, yes. One should consume nuts, seeds, and fruits. These all have enough quantity of nutrient, so that is going to be helpful for your, not just for your hair, but for your overall health, for your body, for your skin, for your hair, each and everything. Okay. So doctor, after like we have talked about hair loss, we have talked about causes and other stuff. Another very common problem which is faced by all of us is the dandruff. So what is this dandruff and does it really cause like dandruff cause hair fall or not? Okay, so dandruff is actually a very common condition, and in fact, in my observation, almost 70 to 80% of the people are suffering with some form of that dandruff. It can be mild, it can be severe. It is an inflammatory condition, so it produces flakes. It produces flakes which is present on the scalp surface, or sometimes that comes out in the form of powdery, white powdery also, and that can be present even on your ears or your sides of the nose, on your beard area as well. So, dandruff itself is not directly linked with the hair loss, but because dandruff can increase inflammation, और उस inflammation की वजह से alopecia further contribute हो जाता है, then people often have a tendency for itching because dandruff causes a mild itching. So if you continue to itch your scalp, so उसकी वजह से hair में mechanical breakage होता है और hair fall increase हो जाता है. So dandruff is not directly linked with the hair loss, but because of dandruff, hair loss is going to increase. Okay, so it's not directly proportional, but yes, it can have a Yes, cause it and can effect. contribute. It can contribute on your ongoing process of alopecia. Okay, that's very interesting, doctor. So, doctor, like, जब भी like आजकल like whenever we have a dandruff or a hair loss problem or if even if we are tired, then एक नुस्खा जो हर mother बोलती है करो कि oil लगाओ, massage करो, भर भर के oil लगाओ. If you will apply oil, they say that your hair will be stronger and thicker. So, what's the fact behind this? Like, oily hair is a boon or a bad?
Oiling hair is not a good thing because dandruff itself is because your scalp is producing oil. That's why dandruff is happening. वो जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें डर्ट एंड पॉल्यूटेंट इकट्ठा हो रहे हैं, वो सारी चीजें मिल करके डैंड्रफ बना रहे हैं। अभी आपको ऑलरेडी डैंड्रफ है, उसमें आप और ऑयल डालोगे तो वो और भी पॉल्यूटेंट और डर्ट को कलेक्ट करेगा, और वो सारा डैंड्रफ क्लोज होकर के आपके स्कैल्प पे ही रहेगा, तो टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। इसके लिए जिसको भी डैंड्रफ है उनको हेयर ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको हेयर ऑयल यूज भी करना है तो आप सिर्फ हेयर स्टैंड्स में यूज कर सकते हैं, स्कैल्प पे नहीं। तो Hmm. hair oil is not a good thing for people who are already suffering from the dandruff. अगर आपको डैंड्रफ है, आप एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कीजिए, क्लीनिंग कीजिए अपने हेयर की, कंडीशनर यूज कीजिए जिससे आपका स्कैल्प मॉइस्चराइज है, तो ये सारी चीजें कीजिए rather than using hair oil. Okay, so it's not good to apply on the skull because always okay to apply on the hair strand. You The, just that yeah, moisturizing yeah, effect. yes, And oiling doesn't promote hair growth. no, oiling doesn't promote hair growth. Okay, It ये just give a signiness, it's just give a signiness, just give a kind of nourishment. That's it. हम्म, It will not protect against hair loss or alopecia. ओके सो अगली बार अगर किसी मम्मी बोले कि बाल ग्रो होंगे तो कहना कि बाल ग्रो नहीं होते, जस्ट वो नेचुरल हेयर हाँ, बाल ग्रो नहीं करते हैं, मसाजिंग हेल्प्स। क्योंकि हेल्प। क्या होता है, मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सो दैट कैन हेल्प इन द हेयर ग्रोथ एंड कंट्रोल हेयर लॉस। ऑयल itself have no effect. Massaging can help in the hair growth. And massaging can be done without hair. It doesn't necessary to use hair Yes, oil. yes, yes, Yeah. yes. Massaging, you just you can rub your hand with a mild pressure. तो massaging आप कर सकते हो, but oil hair loss को control नहीं करता है. Okay, very informative, doctor. I really enjoying knowing so many facts. Yeah, so now my favorite part, doctor. Can you give us some Yes, simple tips for healthy hair? yeah. There are various tips. One, you should use a good shampoo to clean your scalp, but you should not overuse it. So Mm-hmm. scalp should not be washed daily with the shampoo. 2 to 3 times in a week is adequate. Otherwise, your natural oil will stripped off, and you can get dry scalp or dandruff will start accumulating. So 2 से 3 बार सप्ते में आप शैम्पू, एक अच्छा शैम्पू यूज कीजिए, एक गुड कंडीशनर यूज कीजिए जिससे आपका स्कैल्प का सरफेस जो है वो मॉइस्चराइज रहे। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो वो जेंटल होना चाहिए, सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री होना चाहिए जिससे कि वो स्कैल्प पे हार्श इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो माइल्ड होना चाहिए। बैलेंस डाइट लीजिए विथ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स, और सन प्रोटेक्शन कीजिए, ह्यूमिडिफाई रखिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और एक बेसिक अच्छा डाइट प्लान कीजिए। इसके बाद भी कुछ अगर दिक्कत है तो हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। Yes, doctor. Very informative, doctor. This discussion was indeed very helpful. So, can I take थैंक some यू, live थैंक यू। audience question? यस, यस, श्योर। Yeah. So the first question from our audience is, Hi डॉक्टर, मैं भी गोरखपुर से हूँ। मुझे एंड्रोजेनिक एलोपीशिया है और मैंने सारे नुस्खे अप्लाई कर लिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने मिनॉक्सिडिल भी यूज किया है बट कुछ नहीं हो रहा है। आपके पास कोई सोल्यूशन है? कैसे अपॉइंटमेंट ले? ओके, सो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक बहुत ही कॉमन और क्रोनिक कंडीशन है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा क्लिनिक आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डर्माजेनिक्स स्किन हेयर एंड एस्थेटिक क्लिनिक नेम है। तो कोई भी इसको सर्च करके कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकता है। और अगर आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से पीड़ित हैं और बहुत सारे नुस्खे अप्लाई कर चुके हैं तो नुस्खों से कोई काम नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा करके और ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। रोम इज नॉट बिल्ट इन a day, so alopecia is also not going to control in just 5 days, 10 days of time. You need to have patience. अगर आप धैर्य के साथ लंबे समय तक ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हेयर फॉल कंट्रोल होगा, न्यू हेयर भी आएंगे,
बट एक्चुअली एक सिंगल हेयर को ग्रो करने के लिए मिनिमम 90 डेज का टाइम चाहिए होता है। तो हम्म, अगर आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट भी करते हो तो उसका इफेक्ट 3 मंथ के बाद आना शुरू होगा। ठीक है। हम्म, तो आपको प्रॉपर पेशेंस चाहिए और यू नीड टू कंटिन्यू विथ योर ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, देन यू स्टार्ट गेटिंग रिस्पॉन्स। वी नीड टू मेंटेन इट फर्दर। तो धीरे धीरे फिर आपके हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है, हेयर लॉस रुकता है और न्यू हेयर भी आने शुरू होते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो एफडीए अप्रूव्ड हैं, जिनको चलाने से हेयर फॉल वगैरह सब कुछ कंट्रोल होता है। नई थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ पीआरपी या जीएफसी, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी कहते हैं, वो भी अवेलेबल है। स्टेम सेल थेरेपी अवेलेबल है। साथ में अगर किसी को बहुत सीवियर हेयर लॉस है तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसी भी फैसिलिटी है, जिसमें एफयूई मेथड से एक सिंगल हेयर फॉलिकल को निकाल करके लगाया जाता है और वो ऑलमोस्ट नेचुरल लुक दे देता है। और फिर आप दवाओं से और सॉल्यूशन से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनसे एलोपेशिया को ट्रीट किया जा सकता है। तो बट आपको डेफिनेटली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। तो यस। बहुत पेशेंट ऐसा करते हैं कि जैसे डायग्नोस हुआ एंड देन दे स्टॉप गोइंग टू द डॉक्टर एंड या देन दे ट्राइड एवरीथिंग एंड देन यस आफ्टर फेलिंग देन दे कम टू द डॉक्टर, सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है यस। तो फॉर द अगर आप पेशेंट। 10 दिन या या तो अगर आप 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो और फिर छोड़ दे रहे हो तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपका नुकसान ही होगा जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए 10 डेज 15 डेज के ट्रीटमेंट के लिए। तो या तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करो तो एटलीस्ट फॉर 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एड्स वगैरह के झांसे में मत आइए। आदिवासी हेयर ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल लगा लें और बाल एकदम ऐसे ग्रो कर जाएंगे, ये सब फेक है, मिथ है। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ऑयल से कोई भी हेयर लॉस कंट्रोल नहीं होने वाला है। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा अगर आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से अफेक्टेड हैं या किसी भी फॉर्म के एलोपेशिया से अफेक्टेड हैं। okay. Very interesting, doctor. Another question from our viewer is, hi, doctor. My age is 50. I have reached to my menopausal age. And जब से मैं यहाँ इस एज पे आई हूँ, मेरे को बहुत सारे बाल गिर रहे हैं और मेरी पड़ोसन ने मुझे बोला कि आप हार्मोन थेरेपी कराएं, तो उससे मेरे बाल वापस आ जाएंगे। सो फैक्ट क्या है इसके पीछे? देखिए, जब आपने क्वेश्चन पूछा था कि हेयर लॉस क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें से एक कारण है हॉर्मोन्स। ठीक है। तो ऑब्वियसली मेनोपॉज के टाइम पे बॉडी में हार्मोन चेंज होता है और जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से एलोपेशिया स्टार्ट होता है तो वो कोरिलेटेड हो सकते हैं। बट डेफिनेटली हार्मोन ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको एलोपेशिया है तो आपको हेयर के डॉक्टर के ही पास जाना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कुछ खाने की दवाएं होंगी, कुछ लगाने का सोल्यूशन होगा। तो वो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हेयर लॉस ठीक होगा और न्यू हेयर भी आएंगे। बट हार्मोन ट्रीटमेंट करने से अनलेस अंटिल आप किसी हार्मोनल डिसऑर्डर से अफेक्टेड हो जिसमें आपको हार्मोन बन ही नहीं रहे हैं, तो वो कंडीशन हो सकती है। बट डेफिनेटली अगर हेयर की प्रॉब्लम है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। Okay, that's very interesting. Question from a viewer is, hi doctor, I have been diagnosed with anemia and I have a severe B12 problem and I'm Definitely. taking injections and I'm also facing hair loss and doctor said कि injection लूंगी तो hair loss कम हो जाएगा, तो क्या ये सच है? देखिए, बहुत सारे विटामिन एसोसिएटेड है। तो यस, B7 B12, डी विटामिन D3, ये सब कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं हेयर लॉस से। और अगर आपके बॉडी में B12, विटामिन D3 एंड B7 इन सब की अगर कमी है तो आपका हेयर लॉस एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसके साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो तो वो धीरे धीरे ठीक होगा, बस उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो बॉडी में जो भी चीजें होती है वो तुरंत रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन वही चीज एयर में रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 3-4 मंथ का टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हो तो भी आपको पेशेंस रखना होगा और आपको वेट करना होगा। हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए।
बट अगर नहीं हो रहा है और बहुत सीवियर हो रहा है तो अगेन आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि हेयर एक ही दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में कंट्रोल होने वाला नहीं है हेयर फॉल। Hmm. उसके लिए आपको 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ टाइम देना पड़ेगा। Mhm. Yeah, even if after taking all the prescribed medicines and B12 injection, it's not working, then she should visit a dermatologist. यस, यस, यस। Okay, I'll बिकॉज quickly take one. Yes, doctor. Yeah, because many a times people just correlate. May be possible कि she is suffering from some other condition and Yeah. she is just correlating with vitamin B12 deficiency और वो ले रही है। हो सकता है उसकी वजह से that person is not suffering with the hair loss। हेयर लॉस का कोई और कारण हो सकता है। तो ये सब चीजें एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर पाते हैं। तो अगर आप घर बैठ के आप सोचे हो कि अरे मुझे बीटल कम था और मैंने दवा इसका कंज्यूम कर लिया तो अब तो मेरा हेयर लॉस ठीक हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हेयर लॉस Mm. इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल फैक्टर, नॉट जस्ट वन फैक्टर। इसके लिए डोंट जस्ट वेट। ठीक है, Mm. अगर आप हो रहा है हेयर लॉस तो हेयर खोलने का आप वेट करते रहोगे, उससे बेटर है डॉक्टर को कंसल्ट करिए और जितने भी हेयर हैं उनको बचाया जाए और न्यू हेयर लाया जाए। Yes, that's interesting. Yes, doctor. I'll just quickly take one last question because we are running out या, of time. Yeah, यस, so hi, doctor. My daughter is 12 years old and she's having a lot of gray hair at such a young age. My mother told that if I apply turmeric oil, the hair will become black and no gray hair will come back. I've been applying turmeric oil for last past 3 months, but it's not working. Why she's having gray hair? Is there any solution for it? देखिए टर्मरिक ऑयल और इस तरीके के घरेलू नुस्खे जो भी हैं उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि ग्रे हेयर के अगेन बहुत सारे कारण हैं। अगर अर्ली एज में ग्रेइंग हो रही है वी नीड टू चेक ब्लड इन्वेस्टिगेशन। क्या कोई Mm. ऐसी एलिमेंट है जो बॉडी में बहुत कम है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर थायराइड या सीबीसी या विटामिन बी 12 या D3। ये सारा हमको सब कुछ चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ग्रे हेयर के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन कंट्रोल ग्रे, वो आगे प्रोग्रेस होना बंद हो जाए। और फिर किसी डिफिशियंसी की वजह से अगर ग्रे हेयर हो रहा है तो उसको करेक्ट करके उसको ठीक भी किया जा सकता है। बट हाँ, Mm. अगर आप ऑयल लगा रहे हैं, टर्मरिक लगा रहे हैं, कर्ड लगा रहे हैं तो इन सब चीजों से आपका ग्रे कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो वेट मत कीजिए, डू कंसल्ट मी एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। So the same viewer is asking, डॉक्टर ये जेनेटिक तो नहीं है? कैनिटीज यानी कि अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो बहुत सारे फैक्टर की वजह से होता है। यस, जेनेट जीन्स आर वन फैक्टर्स, तो जेनेटिक्स हो सकता है। अगर पेरेंट्स की अर्ली ग्रेइंग हुई है तो पॉसिबल है कि जीन्स इन्वॉल्व हो। बट बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी होते हैं, वो Hmm. हमको एसेस करना पड़ेगा आफ्टर सीइंग पेशेंट कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से कंट्रीब्यूटिंग ये ग्रेइंग हो रही है और फिर अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। Okay, so for appointment, you can always Google's doctor name, like and clinic name, Dermagenic Skin and Hair Aesthetic Clinic, Gorakhpur. Yes, Yeah. yes, yes. So my name is Dr. Ratnakar Shukla and my clinic name is Dermatologist, Skin Hair and Aesthetic Clinic Gorakhpur, तारामंडल एरिया में है। कोई भी गूगल पे सर्च करेगा तो वो आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते Oh, thank you so much, doctor. This discussion was very informative. So हैं। finally, थैंक यू। doctor, would you like to give any take-home message or any other suggestion to our viewers today? Thank you so much. Thank you so much for giving me this platform to spread awareness about the hair health, which is the need of the hour for the general public. My take home message is कि अगर आप हेयर लॉस से अफेक्टेड हैं तो ये अगर बहुत माइल्ड फॉर्म में है तो ठीक है, आप बैलेंस डाइट लीजिए और सारा टेक केयर कीजिए। बट अगर ये आपका हेयर लॉस बढ़ रहा है तो वेट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि वेट करने के चक्कर में आपके हेयर ही नहीं बचेंगे। तो हेयर को बचाइए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आइए और अपना इलाज करवाइए जिससे जल्दी से जल्दी आपकी कंडीशन को करेक्ट किया जा सके।
The early intervention is the key to everything. Yeah, Yes, yes, yes. Early intervention and the patience. yeah, and Because patience. with hair, yes, with hair you need patience. आप एक महीने में कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा. Mhm. Yes, doctor, this discussion was very informative, and the viewer have loved the session, and they have given a lot of good comments. I'm so sorry I could not take all the questions because of limited time, but yes, doctor, it was delight to have you, and thank you so much for your valuable time. Thank you so much, ma'am, for giving me this platform, and I appreciate this. Thank you. And I actually enjoyed talking to you, and I hope we meet again with another new Sure. topic on hair or skincare, and we create more awareness on this Sure, sure, platform. sure, sure, sure. I'm always interested to spread awareness, to break the myth, and to spread the actual truth and knowledge about the skill care and hair care. One should follow me on Facebook, Instagram, and YouTube because I oftenly post videos also related to some myth. Like people often question me कि सर हेलमेट लगाने से हेयर फॉल होगा क्या? तो नहीं. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जनरल पब्लिक के माइंड में रहता है कि ये करने से ये होगा कि नहीं होगा. तो ऐसे सभी चीजों को जो भी मेरे सामने आती है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, so that people can see and clear their doubts also. Okay, viewers. So do follow Dr. Ratnakar Shukla, and let's see you again, Doctor. Whenever you have time, we'll meet again and we'll talk more about and create more awareness. Until then, take care and see you soon. Thank you so much, Dr. Mona. Loved interacting with you and hope to see you soon in the next subtopic related with the skin or hair. Thank Same you. here. Take care. Have a nice day. Yes, thank you so much. Bye. Bye.